Namaste, and welcome to the second episode in the Sitaram Goel Centenary series. You know Sitaram Goelji very well. In the last episode, in the episode 1, we had Shankar Sharanji talking about his transformation from a communist atheist to Hinduism. And of course, we threw sufficient light on his personality as well in that series. Today, we have another luminary with us and also Shankar Sharanji. So we have Koenaraad Elst, who has had a very long association with Sitaramji. And Shankar Sharanji, of course, we already discussed this. So today, Koenaraad will be talking about one of his seminal books. It is called The History of Hindu-Christian Encounters. Shankar Sharanji will be talking in Hindi, but Koenaraad will be talking in English. So Koenaraad, let's start with this. I think when we read the preface to this book, this history of Hindu-Christian encounters, I think that kind of sums up the approach of this great Rishi, Sitaram Goel, to this entire question. Would you agree with that? Well, he stays close to his vocation as a historian in this case. You see, rather than arguing himself, he goes over the history and reports on what a whole number of Hindus have argued, ever since the 3rd century. So all the arguments that are necessary end up being given through the mouth of someone else. And so you see, unlike a few minor writings, like about Christian sannyasins, here he does not argue himself. It's not necessary, because all the arguments that are reason enough for a Hindu not to be tempted by Christianity have already been given by someone or other. Even people who are not usually in the good books of militant Hindus, like Mahatma Gandhi, for example. You see, Gandhi has been stolen by the secularists as a stick to beat Hindus with. Nevertheless, on the issue of Christian missions, he was entirely on the Hindu side. And he argued very, very forcefully why the Christians had no business converting Hindus, why Hindus didn't need Christianity. Firstly, for religious reasons, for reasons of contents, Hinduism had everything. Christians could not add to that. And secondly, for social reasons, namely conversion ended up splitting families apart. Like you can see massively in the tribal belt on which the missionaries have concentrated. You see very often people who convert to Christianity sever all their ties with their society, don't want to play the local games, don't want to sing in the local music band because the songs are deemed devil worship and so on. So a society is split down the middle as soon as people start converting. That perhaps was the principal reason for Mahatma Gandhi. It was very much against ahimsa, against non-violence. It created a lot of trouble. And so he was very much on the Hindu side and against the missions. So, all through history, Hindus have argued this way. And unlike in the case of Islam, where Hindus have not addressed the contents of Islam until about 1875, and even then only very, very sparingly. You see, against Christianity, there has been sufficient argument already for a long time. And so, you see, he brings it all together and, let the earlier authorities speak for themselves.
Shankar Sharan ji, yeah, can you mute your mic, please? Conrad, yeah, thank you. शंकर शरण जी, इस पुस्तक की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर्स, अभी जैसे कोनराड ने बताया कि जो पूर्व पक्ष हमारा है ईसाइयों के विरुद्ध, मसीही मत के विरुद्ध, वो इस्लाम से अधिक पुराना है और इस्लाम से अधिक सुदृढ़ है। और जैसा कि कहा कि सीताराम गोयल जी ने जो ये पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से न कह के, अपनी ओर से न कह के, जो इतिहास एज जिसको कहते हैं कि एक इतिहास लेखक के रूप में उन्होंने उसको चित्रित किया है, जो मेसोपोटामिया से आरंभ करते हैं वो 20वीं शताब्दी से, और मेसोपोटामिया के बाद में एक मिनट इसको मालाबार में जो सबसे पहले सीरियन क्रिश्चियंस आए उनकी बात करते हैं, और उसके बाद फिर पायरेट्स की बात करते हैं, पायरेट्स इन प्रीस्ट क्लोथिंग, मोनोलॉग टू डायलॉग, सब जो बातें करते हैं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर दृष्टिपात करें और थोड़ा इसका संदर्भ स्थापित करें। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने इस विषय पर कोनराड को बुलाया, जो न केवल इस विषय के बल्कि इस पर सीताराम गोयल के काम को भी रखने वाले सर्वोत्तम विद्वान हैं। बल्कि जिस पुस्तक आपने उल्लेख किया, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर्स फ्रॉम 4th century अप टू दिस 20th century, 16 शताब्दियों का जो इतिहास है क्रिश्चियनों के साथ हिंदू संसर्ग का, उसको उन्होंने 5 भागों में खंडित करके रखा है उनकी इसके भूमिका में। एंड कोनराड ने बिल्कुल सही कहा कि ये, और बल्कि ये नोट करना चाहिए कि ये सीताराम गोयल की महानता और उनकी दूरदृष्टि का एक संकेतक भी है कि जिस विषय पर दूसरे विद्वानों ने पहले काम किया या अभी भी कर रहे हैं, वो उनको सामने रख करके अपने आप को पीछे रखते थे। और ये पुस्तक उसका प्रमाण है कि जब उन्होंने देखा कि हिस्ट्री है हमारी एनकाउंटर्स की, तो उसको उन्होंने प्रामाणिक रूप से सामने रखा। लेकिन इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जो सीताराम गोयल ने लिखी, उसमें इस पूरे 16 शताब्दियों के एनकाउंटर को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। जैसा आपने संकेत किया कि शुरू में वो पायरेट्स थे, फिर वो ये इंपीरियलिज्म के साथ आए, इंपीरियलिस्ट आर्मी के साथ आए, पुर्तगीज और फ्रेंच, ब्रिटिश ने उनको सबसे कम महत्व दिया, सबसे कम सहायता दी, लेकिन पुर्तगीज और फ्रेंच ने उनको सहायता दी, जिसका प्रमाण गोवा और पौंडीचेरी मिलता है, जहाँ पर क्रिश्चियनों ने बहुत मजबूत अड्डे बनाए। लेकिन जो मैं आज के संदर्भ में उल्लेखनीय समझता हूँ कि ये जो 5वां स्टेज वो बताते हैं सीताराम गोयल जी, वो है स्वतंत्र भारत 1947 से आज तक का। और हमें इस पर जरा केंद्रित करना चाहिए। वो भी महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले इनकाउंटर्स महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इनकाउंटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा सीताराम गोयल भी कहते हैं, और जो हमारे परसेप्टिव धर्मगुरु हैं हिंदू आज भारत में, वो भी कहते हैं, और ये सोशियोलॉजिकली देखा जा सकता है कि जो सफलता क्रिश्चियन मिशनरीज को पिछले 400 सालों में नहीं मिली, जब से वो पुर्तगीज और फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के पीछे पीछे आए आर्मी के साथ और यहाँ अपने कोशिशें शुरू की, जो सफलता उनको 400 सालों में नहीं मिली थी, उससे 1000 गुनी सफलता उनको पिछले 70 सालों में मिली है। और ये इसलिए मिली है कि भारतीय नेताओं ने, गांधी जी का उल्लेख किया कोनराड ने, उनका क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ डिस्कशन का वो पोजीशन तो है ही जो उन्होंने रखा, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी है इनडायरेक्ट, कि उनसे मिशनरियों को और जीसस को और उनकी थियोलॉजी को एक ऐसी रेस्पेक्टेबिलिटी मिली जो पहले कभी नहीं थी।
तो ये 400 सालों में जितनी उनको सफलता नहीं मिली मिशनरियों को, वो पिछले 70 सालों में मिली है। और वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म के नाम पर, कॉम्पिटिटिव माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर क्रिश्चियन मिशन अपरेटस को, जो कि मुसलमानों की तुलना में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल है सभ्य तरीके में, वो उसका उन्होंने भरपूर दोहन किया। और ये भारतीय संविधान में लिख दिया गया कि ये राइट टू कन्वर्स, ये राइट टू प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। और इस पर संविधान सभा में विवाद हुआ था कुछ लोगों ने, जिसमें मेरे ख्याल से एक मुस्लिम भी थे और बाकी लोग जो हिंदू थे, जिनको ये पूरा मिशनरी क्रियाकलापों का पूरा इतिहास सबको मालूम था, उन्हीं को नहीं था। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये आप क्या कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कन्वर्जन करते हैं, ब्लड शेड करते हैं, हिंदू समाज को तहस नहस करते हैं, फिर भी ये फंडामेंटल राइट देना। लेकिन उनको दिया गया और बाद में नेहरू जी ने एक पत्र लिख करके उसको ये भी क्लियर किया, लेटर टू चीफ मिनिस्टर्स, कि वी बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन allow not only the propagation of religion but also proselytization। तो प्रोजेलाइजेशन किसी भी तरह से वो करें, ये उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जो कि अनबिलीवेबल था। और इसको क्रिश्चियन पादरियों ने भी अपने आपसी डायलॉग में और इवन किताबों में पब्लिश करके लिखा है कि ये ऐसा है कि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें कभी नहीं मिली थी और ये बिल्कुल कल्पनातीत सफलता हमारे लिए है। तो उसके कारण यह संभव हुआ कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, केरल और बहुत सारी जगह, आंध्र, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, सब जगह मिशनरियों ने जो सफलता पाई है वह हमारे अपने लोगों की देन है। तो मेरे मन में आता है कि मैं वो पिछले 4 ऐतिहासिक खंडों के बजाय मैं लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित करूं कि ये पिछले 70 सालों में हमारी सभी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने सेकुलरिज्म के नाम पर जो एंटी हिंदू एपरेटस को मजबूत किया है, क्रिश्चियनों का भी, मिशनरियों का भी और इस्लामियों का भी, इस पर ध्यान दें क्योंकि वो आज भी तेजी से चल रहा है। और सीताराम गोयल की इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व तो यही है कि उन्होंने वो पूरी बैकग्राउंड क्रिश्चियन मिशनरीज की दी है और उनके इस प्रीफेस में इसका उल्लेख है कि उनको हिंदू समाज ने कभी भी कोई सम्मान तक नहीं दिया था। उसको वो जिसके लिए वर्ड इनको इस्तेमाल करते हैं, अनएवॉइडेबल न्यूसेंस। हिंदू समाज ने क्रिश्चियन मिशनरियों को अनएवॉइडेबल न्यूसेंस कहा था और इसी रूप में उनको ट्रीट किया था अंटिल महात्मा गांधी ने उनको रिस्पेक्टेबिलिटी दी। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस उनको सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक हाई प्लेटफॉर्म दिया, हिंदुओं से भी ऊंचा। हिंदुओं के पास वो अधिकार नहीं है जो आज क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के पास है। तो इस रूप में इस पुस्तक का और इसमें जो बातें कही गई हैं सीताराम गोयल द्वारा और बाकी सभी जो एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें अनेक, मुझे लगता है 12 या 13 पीस में वो एनकाउंटर्स का विवरण है जो अलग अलग हिंदू मनुष्यों के साथ या संगठनों के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को हुए थे, और ये बहुत ही मूल्यवान है। Now I come back to Koenaraad. Professor Shankar Sharan has actually pointed out to the fact that the phase 5 of this entire exercise is very important, but I have always put great store by the background. So I take you back to the starting of the dialogue, as you said. There was a monologue initially, but in this dialogue, according to Sitaram, it started somewhere in late 17th century. And that was brief, but the major part of the dialogue actually started in the 19th century, the second part of the dialogue, that is with Ram Mohan Roy. So I would like you to take us back to that dialogue and how that dialogue actually panned out, and to probably, according to me, to the disadvantage of the Indians, and how it went to influence the course of events, first in the 19th century, and then it took its natural route later. Yes, well, let's
start at the very beginning. You see, today, at the time of our recording, perhaps not the time when people will be watching, but it happens to be Ascension Day, the day when Jesus, 40 days after his resurrection, is supposed to have gone up to heaven. Now, just before going up, he tells the apostles who are around him that they should go into the world and convince all people and make them Christian. So some people in India are of the opinion that there is really no quarrel with Christianity, only with some churchmen who have misunderstood the real message of Christianity. And they even say, and I quote, Jesus would never have accepted this idea of conversion. Now, it is exactly the opposite. It is Jesus himself who has given the Great Commission, as they call it, the Great Commission to go and convert everyone. He even says, he justifies his Great Commission by saying that those who convert will be blessed and those who don't will be doomed. So that's very much the Christian mission. And so that's quite intrinsic to Christianity. If the missionaries lobbied in the Constituent Assembly to make sure that the permission to propagate religion was included in the Constitution, it is entirely faithful to the core of Christianity. Now, one of the people who took this very serious and who was very creative in the attempt was Roberto De Novelli in the 17th century. He was an Italian nobleman, and he went to live in Tamil Nadu. He took to Indian dress, Indian food, and so on. He learned Tamil and Sanskrit to perfection. And so he pretended towards the Indians to bring not a different religion, but a sort of new and more perfected form of Hinduism. And he called the Bible one of the Vedas, a fifth Veda, which already is a well-known concept in India anyway. And so he is the great pioneer of what is now called inculturation. It is still going on. It's still continuing in India. It has never been repudiated by the church. I mean, in recent decades, there have been reforms in the church, but not about this point. They still want to convert all of you and want to use the inculturation as one of the techniques of conversion. Like, for instance, in Vienna, there is an institute for modern Christianity called the Roberto De Novelli Institute. So, I mean, they have not changed that at all. Now, in his case, there's not so much conversion. You see, in his case, he is still like discovering the terrain and immediately adapting his conversion strategy. He also lobbies with the Pope to give permission for certain techniques that will help this inculturation. Like in 1623, I think, the Pope gave permission for maintaining the caste system within the church. You see, the church had no problem with caste inequality. I mean, Europe was also full of inequality. The church, for instance, supported monarchies, supported the aristocracy, opposed egalitarian movements once they arose. So with the caste system itself, they had no problem. The peculiar form it took in India and the association with Hindu religion, that was a bit of a problem. That's why he needed special permission. But so once that permission was granted, you know, casteism took over in the South Indian churches, where many old churches still have separate entries for high and low castes. Then, so as a reconnaissance mission, it was very useful. You know, you could see through De Novelli really what Christianity was about.
you also got a taste for the sophistication of the Christian mission. You see, as opposed to Islamic conversion drive, which uses strong arm methods mainly, Christians really know their stuff. Like, for instance, they really get to know the terrain, they get to know their enemy. They know a lot about Hinduism. And so they really fine tune their strategies to the audience that they're going to meet. Right. So in the 19th century, we got a lot more direct dialogue. Like we get several pundits who write in Sanskrit and who, in answer to Christian writings in Sanskrit, who really already start going into the trouble with Christianity, who really already start showing what is wrong with Christianity, and in a rather sophisticated way. It is not always like that. Like in the Arya Samaj in the 19th century, which was a sort of Hindu or Vedic fundamentalist movement, was very strongly against conversions. There you get people who start writing against both Christianity and Islam, but in a rather gossipy way, like the height of which is the writing against Muhammad, Rangila Rasul, which is about the sex life of Muhammad, which is like, you know, a tabloid writing scandalous about some celebrity and, you know, playing indignation at the, you know, moral turpitude that is being described, but at the same time being titillated by, you know, everything he can describe. So, I mean, that's not the best way of polemicizing. But so at the same time, parallel to that, you know, here and there in corners, you already had a far more sophisticated and better informed type of polemic against Christianity. Ram Mohan Roy is perhaps not the best example in the sense that on the one hand, he argued against Christianity as also against Islam. But on the other hand, he also took over a lot of Christian ideas. So he founded the Brahmo Samaj, which of course was a way of reaffirming Hinduism, but at the same time of reforming Hinduism, making it more respectable in the eyes of the Christians. And so he took over a number of Christian ideas, like he opposed idolatry and he opposed polytheism. You know, this we will also see in the case of the later Arya Samaj. But so he took from Hinduism the most philosophical parts, the parts least tainted, so to speak, by idolatry, by polytheism. So, you know, if you talk about Atman, it's something abstract, it's something philosophical. Whereas if you talk about Vishnu and Shakti and Kali and so on, to Christians it is distasteful. And so in the case of the Brahmo Samaj, that was also being avoided. So there already you see the trouble in which Hindus tend to land themselves if they try to argue against Christianity, but at the same time try to appease Christians and take over Christian ideas. Okay, so that was about Ram Mohan Roy, the half-hearted dialogue. I think that's the best way to put it. And as you mentioned, Arya Samaj also was more of a reaction. It also took a lot of Christian ideas, at least that's what I think. The way they shape their arguments. Many of them tend to almost Abrahamize the Indian argument. शंकर शरण जी, आपने जो 5वें दशक पर जो फोकस रखा है,
तो उसके बारे में यदि हम थोड़ा विस्तार में यदि बात करें तो जैसा कि सीताराम जी कहते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का उल्लेख किया है इस पुस्तक में, और उन्होंने पूरा जो है अब 1996 तक जो इनका पूरा जो आलेख किया है उसमें मिशन सिंस इंडिपेंडेंस की भी बात की है। उसमें एक आता है सन्यासी या स्विंडलर, सन्यासी स्विंडलर्स। तो स्विंडलर्स को क्या कहें, ठग कह लें या जो है वो जिसको कहते हैं जो पैसा ऐंठने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं स्विंडलर्स बेसिकली। तो ये सन्यासी जो स्विंडलर्स जो है ये एक अलग भाग में भी छपा हुआ है, एक अलग से है ये सन्यासी। तो और इसके साथ साथ एक इन्होंने होक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो चैप्टर है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो 2-3 जो इन्होंने बताया, देखिए होक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, सन्यासी और पैसा ऐंठने वाले, और इनके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, ये पुस्तक है, ये सन्यासी और स्विंडलर्स, उसका सब टाइटल है, मेन है कैथोलिक आश्रम्स, सन्यासीन्स और स्विंडलर्स। वो पैसा ऐंठने वाले टर्म में नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो धोखा देते हैं, और इसके समाचार आते रहते हैं। जैसे दुर्गा पूजा हो रही है, वो उसमें शामिल हो जाते हैं और मूर्ति के नीचे जीसस की एक प्रतिमा भी रख देते हैं। कहीं कोई और फेस्टिवल हो रहा है हिंदुओं का, वहाँ पर जाकर के जीसस मेरी को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसे हम कभी राधा कृष्ण या राम सीता की मूर्तियाँ लगाते हैं। तो हिंदू मंदिरों में भी जाकर के जीसस और मेरी की मूर्ति लटका देना, इस तरह ये एक तरह की धोखाधड़ी है, उस रूप में स्विंडलर्स उन्होंने कहा है, और वो काफ़ी बढ़ गई है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में, ये गोवा में तो नहीं, ये आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, वो जो हिंदू तौर तरीके हैं, यहाँ तक कि वेशभूषा, तो चर्च को भी उन्होंने मंदिर वाला शेप दिया है। चर्च के जो टिपिकल गोथिक और यूरोपियन मॉडल हुआ करते थे, उसको बदल करके उन्होंने हिंदू मंदिरों जैसा रूप दे दिया है, और कुछ जीसस के भजन उसी तरह से बनाते हैं। तो इस रूप में जो धोखाधड़ी है वो सीताराम गोयल ने रखने की कोशिश की है कि ये जो कैथोलिक आश्रम्स हैं, उनके जो अड्डे हैं, वो हिंदुओं को धोखा देने के पूरे अड्डे में बदल गए। और कोनराड ने बिल्कुल सही कहा कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वो हिंदुओं को जानते हैं, पढ़े लिखे हिंदुओं को खासकर, और उन्होंने पूरे स्वाधीन भारत में, स्वतंत्र भारत में अपना एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स धीरे धीरे बनाया है, जो आज भारत में जो शिक्षा चल रही है, जो मीडिया डिस्कोर्स है, जो एकेडमिक डिस्कोर्स है, वह मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह मिशनरी कंट्रोल में है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मिशनरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भारत में बहुत बड़ी संख्या में है, उन्होंने वो जिसको ये राजीव मल्होत्रा एट्रोसिटी लिटरेचर कहते हैं, वो उन्होंने प्रेरित करके बनवाए कि आपको ये विमेन स्टडीज़ करनी है, दलित स्टडीज़ करनी है, ये ब्राह्मणिकल एट्रोसिटी पर स्टडीज़ करनी है। स्टडीज़ कुछ नहीं, आप कहीं भी एक छोटी मोटी समाचार या घटना ले लो, किसी का स्टेटमेंट ले लो, अपने ही लोगों का। बहुत से ऐसे दलित भी हैं जो कि क्रिश्चियन हो चुके हैं या उनके फुल एक तरह से एम्प्लॉई जैसे हैं, उन्हीं के बयान को सामने रख करके आप एक पूरा एक नक्शा बनाओ कि किस तरह से भारत जातिवादी उत्पीड़न में त्रस्त है, और ये ह्यूमन राइट का जो डिस्कोर्स आप कह रहे हैं, वो पूरी तरह उन्होंने उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। ये सौभाग्य की बात है कि अभी भी आपकी बिरादरी में भी, क्योंकि मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ एक बार, कि कुछ लोग वो हैं जो सतर्क हैं इस पर, और वो जितना वो चाहते हैं उतना उनको मौका नहीं देते हैं। इसके बावजूद वो इतने तरह के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट पर करते हैं, और ये इतनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS अफसर, ये रिटायर्ड मंत्री, मतलब एक्स मंत्री, वो उनके उद्घाटन में चले जाते हैं, और वहाँ जाकर के वो एक और कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट UDHR और ये यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है और ऐसे यहाँ हो रहा है,
और उसके बाद धीरे से उसमें वो जोड़ देते हैं कि ये जो दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसका सॉल्यूशन सिर्फ क्रिश्चियनिटी है। तो उसी एक ही कॉन्फ्रेंस में वो दोनों बातें कहते हैं कि भारत में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब है, और दूसरे उसके सॉल्यूशन के रूप में जोड़ देते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही इसका सॉल्यूशन है, खास करके दलितों के लिए। और फिर ये जितने सोशल साइंस रिसर्च है, सोशल रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं उनके, वो इस एट्रोसिटी लिटरेचर को बढ़ावा देते हैं। और उसी तरह की चीज़ें वो जा करके हमारे सरकारी संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में, यूजीसी में, आईसीएसएसआर में जा करके वो उसको पुश अप करते हैं एक एजेंडा बना करके। तो जो कोनराड ने कहा था, रॉबर्ट डे नोवेली वाला जो मेथड था, वो हिंदुओं को धोखा देने वाला, हिंदुओं को ये दिखाने वाला कि जो क्रिश्चियनिटी के जो सिद्धांत हैं और जो आदर्श हैं वो एग्जैक्टली वही है जो आप भी चाहते हैं। और यही नहीं, ये सीताराम गोयल जी ने अपने इस प्रीफेस में भी लिखा है, इस पुस्तक के जो अभी पहले हमने चर्चा की, हिस्ट्री ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर्स, कि उसमें उन्होंने ये भी उनकी स्विंडलर वाला पार्ट है कि राजा राम मोहन राय हो या केशव चंद्र सेन हो या विवेक स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, रमन महर्षि हो, स्वामी विवेकानंद हो और ये श्री अरविंदो हो, उन्होंने उनको ऐसे प्रेजेंट किया है क्रिश्चियंस ने अपने डिस्कोर्स में कि जैसे ये लोग क्राइस्ट के डायलॉग, क्राइस्ट की बातें कर रहे थे देश में। और गांधी जी को तो उन्होंने कह ही दिया सेकंड क्राइस्ट और क्राइस्ट के अवतार वगैरह। तो एक तरह से ये उस धोखाधड़ी का रूप है कि आम हिंदुओं में क्राइस्ट को वो सम्मान दिलवाना जो कि हमारे देवी देवता और अवतारों को मिला है, जिसमें भारतीय लोगों ने भी उनकी काफ़ी मदद की है, खास करके स्वाधीनता के बाद। लेकिन इसमें मैं एक पक्ष और जोड़ना चाहता हूँ, उससे पहले वाला, जो जिसको आप कह सकते हैं कि थर्ड फेज, वो स्वामी विवेकानंद का फेज है अलग, जो उन्होंने विदेशों में जाकर के हिंदू धर्म को क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ खड़ा किया। और वो बहुत सिस्टमेटिक है, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में वो लंबे लंबे समय तक रह करके, और इसका विवरण इसमें है, जो विवेकानंद वाला चैप्टर है काफ़ी लंबा है, और उसमें एक्सटेंसिव विवेकानंद को कोट करते हुए उन्होंने दिखाया है सीताराम गोयल जी ने कि उन्होंने किस तरह से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ और हिंदू और वैदिक परंपरा का जो ज्ञान है वह उन्होंने व्यवस्थित रूप से अमेरिका में प्रस्तुत किया। और इसको क्रिश्चियन मिशनरीज ने नोट किया और उनको बदनाम करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए वहाँ और भारत में बहुत प्रयत्न किए, जिसके बारे में विवेकानंद कहते हैं मद्रास यहाँ भारत आने के बाद कि किस तरह से वो खुद कहते हैं कि किस तरह से मेरे चरित्र पर, मेरे पूरे क्रियाकलाप पर कितनी हर तरह की मुझे गालियां दी गई, और ये मिशनरीज ने किया। लेकिन यह एक बहुत बड़ी सफलता है कि स्वामी विवेकानंद ने वो जो विश्व धर्म संसद हुई थी 1893 में, वहां से लेकर के अगले 6 साल तक यूरोप और अमेरिका में हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को अपने पूरे क्लासिकल फॉर्म में बिना हिचके, और क्रिश्चियनिटी के एक एक जो फंडामेंटल्स हैं उसको पूरी तरह ध्वस्त करते हुए पोलाइट लैंग्वेज में वो उन्होंने सफल प्रचार किया। उससे हिंदुओं को भी गौरव हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई हिंदू लेखक, विद्वान, संत अमेरिका और यूरोप में प्रसिद्ध हो जाता है तभी जाकर के उसको यहाँ इज्जत मिलती है। ये विवेकानंद के साथ भी था। जब तक उनको राजा खेत्री ने उधर नहीं भेजा था तब तक यहाँ उनको भारी कठिनाई होती थी, उनको मामूली काम के लिए सहायता नहीं मिलती थी। लेकिन वहां पर जब उनकी प्रसिद्धि हुई तो भारतवासियों में एक गौरव हुआ, और वो संदेश संयोगवश यूरोप अमेरिका में फैलने के कारण, चाहे जितना ही फैला हो, वो भारत में भी कई गुना रिफ्लेक्ट हुआ। और यही कारण है कि आज तक विवेकानंद का महत्व भारतीय डिस्कोर्स में या एकेडमिया में या इवन पॉलिटिक्स में एक रेस्पेक्टेबल है, जबकि बहुत सारे दूसरों को एक तरह से धूल दूसरित कर दिया गया है। मुझे लगता है उसका कारण यह है कि उन्होंने अमेरिका में और यूरोप में अपने शिष्य बनाए और उसको सफलता मिली। लेकिन इसका दूसरा पक्ष हुआ भी है, जो कोनराड भी कह रहे थे और सीताराम गोयल ने भी लिखा है, कि वही रामकृष्ण आश्रम, उसने रामकृष्ण को क्राइस्ट से जोड़ करके दिखाया, और उनकी किताब को कहा गया गॉस्पेल ऑफ रामकृष्णा। तो उसमें एक तरह का मिशनरी प्रभाव आ गया और उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन देन अगेन
उसका कारण यह भी है कि हमारे राजनेताओं ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने हिंदू धर्म को इतना नीचा कर दिया, जो कि ब्रिटिश टाइम में भी नहीं था, कि जिनको भी अपने संस्थान या मठ की रक्षा करनी है, उनको लगता था कि अगर हम गैर हिंदू अपने को घोषित कर दें, माइनॉरिटी अपने को घोषित कर दें किसी तरह, तो हम बच सकेंगे। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि रामकृष्ण आश्रम हो या अरविंद आश्रम हो या रमन महर्षि का आश्रम हो, जितने भी इस तरह के संप्रदाय हैं पुराने, वो जो अपने आप को हिंदू से अलग दिखाना चाहते हैं, इसके पीछे ये एक डिप्लोमेटिक मूव भी हो सकता है कि अदरवाइज आपको गवर्नमेंट कभी भी आपकी प्रॉपर्टी और आपकी संस्थाओं को टेक ओवर कर ले सकती है, जो वो मंदिरों के साथ करते हैं। और ऐसे मिस्चीवियस लोग, और यहाँ पर मैं फिर कहूंगा कि इसमें मिशनरीज एक्टिव है, वो मिनिस्टर्स को, जैसा मैंने कहा कि वो रिटायर्ड जजेस को ले आते हैं उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो अपना मिशनरी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाया जाता है कि वो ह्यूमन राइट एजुकेशन हो रहा है। तो ये ह्यूमन राइट का मुद्दा उन्होंने उठाया है, दलित अत्याचार का मुद्दा उन्होंने उठाया है, और ये सर्वधर्म संभाव के बदले हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म पर कीचड़ उछालने का काम उन्होंने किया है। और रॉबर्ट डी नोवेली वाला जो वो मेथड था कि हिंदुओं को धोखा दे करके, वो चाहते थे पहले ब्राह्मणों को ही ले लें। नोवेली से पहले या नोवेली तक ये भी था कि चूंकि ब्राह्मण इस देश में पूजे जाते हैं हर जगह और सर्वोत्तम समुदाय माने जाते हैं, इसलिए अगर आप उनको कन्वर्ट कर लो तो बाकी समाज तो अपने आप हो जाएगा। जब वो उसमें विफल हुए, तब उन्होंने एंटी ब्राह्मणिज्म का पूरा ये प्रचार शुरू किया, बहुत भयंकर। और आज जो देश में एंटी ब्राह्मणिज्म है, उसमें 99% जो उसका सोर्स है वो क्रिश्चियन राइटिंग्स, मिशनरी राइटिंग्स है और मिशनरी प्रोपेगेंडा है। दुर्भाग्य से हमारे कई पॉलिटिकल पार्टीज, तमिलनाडु से लेकर के बिहार, दिल्ली, सभी जगह वो उसका सपोर्ट करते हैं और वो उसको यूज करते हैं। उनको लगता है इससे हम दलित वोट बैंक को ले लेंगे अपने साथ, लेकिन वो वास्तव में हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फेज में जिस सावधानी की जरूरत थी, उसके बदले हम एक जिसको कहते हैं बिना पतवार की नौका की तरह बह रहे हैं। और वो आज खास करके दिख रहा है जब पूरी दुनिया में हल्ला है कि ये हिंदूवादी फासिस्टों की सरकार आ गई है। लेकिन स्थिति यही है कि जो कोनराड ने कहा कि इस्लामियों का जो आर्म्स ट्विस्टिंग मेथड है और मिशनरियों का जो सोफिस्टिकेटेड मेथड है, यह दोनों उसी सफलता से और उसी आराम से भारत में चल रहे हैं। तो मैं नहीं जानता कि आज सीताराम गोयल होते तो इसको किस रूप में देखते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया अपने वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से, बावजूद इसके कि इक्के दुक्के लोग जैसे आप कर रहे हैं उनके विचारों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसी से प्रमाणित है कि जो प्रयत्न आप कर रहे हैं वो सीताराम गोयल की सेंटेनरी पर सत्ता की ओर से या बड़े बड़े संगठनों की ओर से, चाहे वो राजनीतिक हो या अपने को सांस्कृतिक कहते हो या धार्मिक संगठन हो, किसी ने उनकी शताब्दी मनाने की नहीं सोची, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और उसको एम्पावर करने के लिए विचारों से, नॉलेज से, आर्गुमेंट से, और जो दुश्मन है उनका खंडन करने से इतना अधिक काम किया। कायदे से ये एक सुनहरा अवसर होता कि उनकी शताब्दी अगर कोई बड़े संगठन मनाते, राज्य भी मनाता, तो पूरे देश में उन विचारों को उस एकेडमिक काम को पहुंचाया जा सकता था जो कि पूरी हिंदू सभ्यता के सर्वाइवल के लिए और पूरे हिंदू सभ्यता और समाज के गौरव के लिए बहुत ही मूल्यवान है। Right. So I come back to Koenaraad, and I think one of the most important chapters in this book I found is chapter 18. And that chapter deals with Ram Sarup's work. That's the word as revolution, names of gods. And Sitaram Goel actually has given the title as Dethroning Monotheism. And I find this chapter very, very interesting. And really, if you really look at it, it also delineates the change in approach by the missionaries after they did not succeed with their initial attempt to denigrate
Hinduism as devil worship, and then they change their tactics, and it also, uh, I think, in fair amount of detail, it also describes the basic techniques and tactics of the missionaries, as also their doctrines and how to counter them. So before we go to the audience question and answer, I would request Koenaraad to please talk about this particular chapter, and also you may conclude with your opinion on the way ahead, how Hindus can actually push back this whole system of enveloping them with the gospel. Okay. Well, the good thing about Ram Sarup's work is that he really goes to the heart of the matter. And this is special because there's a lot of Hindu complaints about the Christian missionaries that really beat around the bush. Like, for example, there are a lot of scandals about priests misbehaving sexually with children or with nuns. And so that's, of course, that's not good, but that's not what is wrong with Christianity. I mean, men in a position of power, like, for instance, sports teachers in a school, may also tend to misbehave with their pupils and so on. So that's not a specifically Christian problem. And so he goes to the heart of the matter, and there are two things central in Christianity, not one. There's one God, of course, that's inherited from Judaism, and then there's the character Jesus. So on the character Jesus is mostly Goel himself who has critically worked and who has collated and presented for the Indian public findings of Western modern scholarship, which has grown away from Christianity. But about the concept of God, now that's absolutely fundamental. It also largely works against Islam at the same time. Monotheism is based on the idea that number is very important. And so there is only one divine figure, not two. Although Christianity in this regard is on the defensive, not vis-a-vis Hindus who don't know anything about this, but vis-a-vis Jews and Muslims who say that they're not pure monotheists because they have the Father, the Son, and the Holy Ghost. So they say, oh, you people don't worship one God, you worship three of them. Whereas Christians say that God the Father is not God the Son, is not God the Holy Ghost, is not God the Father, but all three of them are God. And so there's only one God. That's a bit of a complex, mysterious doctrine. So anyway, the basic thing is that there's one God, and that so all these gods and godlings of Hinduism are false. Now, to this, Ram Sarup very correctly says that you can't divide the divine sphere. You can't subject it to numerical rules. So there is no fixed number of gods. Like in the Vedas, you have a concept of 33 gods. But then Yajnavalkya says, okay, but you can also say there's three of them, or there's 1.5 of them, and so on. And those 33 are not complete because you have like the goddesses who are not counted among the 33, and so on and so on. So within Hinduism, the number of gods is negotiable. And so you can also say that the divine sphere is one. In one respect, that is also true. And indeed, you see, even in popular Hinduism, in the most illiterate Hinduism, nevertheless, you will have people saying, oh, it is Bhagwan, it is Ishvara, who
who also refer to the unity of God, all while at the same time having a home altar on which they have a Diwali display with Lakshmi, Ganesha, and Saraswati, and so on, who have all kinds of expressions of polytheism. But so the one does not exclude the other. God is many, and God is also one. And so this whole monotheism versus polytheism controversy is a false problem. You know, here really Ram Sarup very well transcends this whole discussion. You know, it's a false problem. What are Christian missionaries coming to trouble Hindus with? You see, they, on the one hand, they have a concept of the unity of the divine, but for them it doesn't exclude the multiplicity of the divine. And so they don't need the Christian missions. You see, nobody has to come and tell them. They have everything in religion within Hinduism. So that's a very, very, very important fundamental insight. And so that, in fact, is what, you know, all these Hindu politicians ought to start with. You know, they have a vague notion that there is a problem with Christianity, but then they try to put it in other terms. Like, for instance, they say, oh, it's Christianity is anti-national. It's linked with America and so on, and that's beside the point. Or it has its sacred places outside India. Just like the Muslims go to Mecca, you see Christians go to Jerusalem, to Rome. Yeah, okay, true. But, you know, Hinduism has never made a point of that. You know, when the Syrian Christians arrived in Kerala in the 4th century, not in the 1st century as they themselves say, Hindus gave them asylum and didn't ask questions. They didn't say, okay, you know, you can only come here if we like your theology. Explain to us what your theology is. They didn't ask questions at all. And even for centuries afterwards, there is no Hindu writing, not even polemical against Christianity, but even just simply an account of what these Christians believe. You see, the Hindus were just not interested. They were satisfied with their own religion. And so, and of course, that's the great difference with the missionaries. You know, the missionaries came here not just to look around. No. You see, they had the mission of converting all Hindus. For them, it mattered a great, great, great deal. And not even what sort of Hinduism. People like Arya Samaj, Brahmo Samaj, and so on, they thought, oh, you see, we can ward off the threat of Christianity by adapting Hinduism, by proclaiming ourselves monotheists and so on. That's all not good enough. Like you see, for instance, with the tribals, there is a lot of Christian writing arguing that the tribals, unlike the Vedic Puranic Hindus, are monotheists. That you see that the so-called Sarna religion in Chota Nagpur is basically monotheism, that they worship one great god and then some lower gods, but then they are redefined that they are angels. They're not really gods. There's only one god, you know, this Singbonga, the sun god. So there's a lot of, you know, writing, you know, to alienate tribals from Hinduism and saying that, you know, they're like almost Christians. They already have monotheism. And now we are here simply to add that small missing part, you know. Now, that's all nice talk, but nevertheless, they do want to convert the tribals. You see, the fact that now they call themselves Sarna rather than Hindu is not going to help. They still need to be converted. And even in these tribal communities, whether you define them as polytheist or not, they are also going to cut down in the middle if some family members convert and others don't, right? So you see, all these distinctions that people can make are like a way of avoiding the real problem. And it's the same in Islam. You know, there has been a problem of terrorism,
And so some Hindus try to be very sophisticated. At the time of the Rushdie affair, they said, oh, it's Shiite Islam, Iranian Shiite Islam. Then you see when the Taliban came about, they say, oh, it's the Haqqani network. It's not Islam, it's a few Muslims who misunderstand Islam and so on. So with Christianity, the same. Hindus, now, sorry to say, but some Hindus are really very pretentious. They think they know everything about everything. You see, having personally studied religions all my life, I would not say I know everything about all religions. But somehow, some Hindu polemicists say so. And so they start preaching Christianity to the Christians. They say, oh, this is not real Christianity. Conversion is not really Christian. I'm going to tell you what Jesus really meant. Now, sorry, in this case, Christians know it better. And, being from a Christian background myself and knowing it fairly well, I can assure you that the mandate to convert everyone, to demonize other religions, that comes from Jesus himself, at least according to the gospel. The gospel is all we have about him. So you see, there it is very good that Ram Swarup went to the essence. And so that is really an example to follow. It's me, the pretensions of certain Hindu organizations who proclaim on behalf of all Muslims and Christians that everybody born in the Indian geography is a Hindu. Now, I have always challenged them and told them, why don't you get some ulama or alim or the whole body of the ulama, that's called ulama, or some pastors or some church to say that? I think that would carry more weight. I think, isn't that an example of that pretentiousness? Koenaraad. Yes, of course. There you mention a very a burning problem, because I understand that in the Hindutva organizations, this tendency is not getting corrected. On the contrary, it's getting worse. The idea of saying that all Indians are Hindus and that India is not, or Hinduism even, is not complete without Islam, by extension. Yeah. That is the latest case. So absurd, you see. So in the time of Rama and Krishna and so on, there was no Christianity, there was no Islam. So they were not good Hindus. That's what follows. And this is so absurd. You see, whatever you have to, what your attitude should be towards Christianity and Islam, that all remains debatable. But the basic fact that Islam and Christianity exist as distinct from Hinduism, that's like so fundamental, so obvious. I don't know what Hindu leaders think to gain by denying such obvious facts. ट्रैक शंकर चरण जी, आपको ध्यान है ना, गांधी जी जो है वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाते रहे और दुनिया भर के मंदिरों में गवा लिए, एक मस्जिद या एक मदरसे में कभी नहीं गवा पाए। वो तो नहीं हुआ, वो तो उनकी अस्थि प्रवाहित करने के लिए पाकिस्तान की नदी में नहीं दिया गया मौका कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, ये तो कुफ्र होगा। जबकि ये वही गांधी थे जिन्होंने उनके खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके सारे उलेमा को पहली बार वो राजनीतिक मंच दिया जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिला था। वो मिस्टर M.K. गांधी ने दिया उनको। तो इस कोनराड ठीक कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियन चर्च मिशनरी अपना काम जानते हैं, अपने दुश्मन को भी जानते हैं। ये सिर्फ हिंदू हैं जो कि महात्मा गांधी के समय से, मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे पहले, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विवेकानंद ने जिसको कहते हैं दुश्मन की जमीन पर जाकर के उनको चुनौती दी और उनको पूरी तरह क्षत विक्षत किया वैचारिक रूप से, और वो पढ़ने लायक है। विवेकानंद की जो अमेरिका में और इंग्लैंड में जो व्याख्यान है, उन्होंने जो गौरव दिया उसको पूरी तरह दरकिनार करके गांधी जी के
पूरे सो कॉल्ड डिस्कोर्स में, डिस्कशंस में, मिशनरीज में कहीं नहीं आता कि विवेकानंद ने और श्री अरविंदो ने उस पर क्या कहा था। उसमें जो कोनराड कह रहे थे वो गांधी जी भी, उसके भी एग्जाम्पल है कि वो हर चीज के बारे में हर चीज जानते हैं। और गांधी जी इसी अहंकार से चलते थे, और उनमें ये अहंकार इतना कूट कूट कर था कि बड़े बड़े हिंदू ज्ञानियों की बात भी सामने रखने पर वो उसका उत्तर नहीं देते थे। कभी कभी अगर विनम्रता हुई तो इतना कह देते थे कि मैं उसका उत्तर नहीं जानता, लेकिन इसी भाव में कि कोई खास उसका महत्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो परंपरा चली है हमारे पिछले 100 साल से, उस पर आज फिर से सोचने की ज़रूरत है। और खास करके जब ये अब नए नए उसमें उनको आर्सेनल में दिए जा रहे हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि गांधी जी ने वो मुसलमानों को वो हथियार दिया जो उनको पहले नहीं था, कि वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हिंदू क्रिटिसिज्म पर। जबकि ये सीताराम गोयल जी ने इसके प्रीफेस में लिखा है इस पुस्तक में कि ये एक गलत धारणा है जो भारतीय बुद्धिजीवियों के बीच स्थापित हो गई है स्वतंत्र भारत में, कि हिंदू टॉलरेशन का मतलब है कि सारे धर्म के नाम पर दूसरे रिलीजन वाले जो भी कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना। और ये पुस्तक यही दिखाने के लिए, यह पुस्तक यह भी दिखाती है कि हिंदुओं ने इसको हमेशा चैलेंज किया था। और जो इक्के दुक्के साधु संत मुगल काल में भी पैदा हुए जिन्होंने राम को रहीम से, कृष्ण को करीम से तुलना की, तो सीताराम गोयल पॉइंट आउट करते हैं कि वो हिंदू सोसाइटी के फ्रिंज पर ही रह गए, उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली। ये एक्सेप्टेबिलिटी पिछले 100 साल में गांधी जी से लेकर के आज के पॉलिटिकल लीडर्स ने दी है, कि उन्होंने जिसको सीताराम गोयल कहते हैं आतताई संप्रदाय, मतलब जो रिलीजन नहीं है, जो गैंगस्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी रेस्पेक्टेबल टेबल देना, बल्कि एक तरह से हायर टेबल देना, ये पिछले 100 साल में हुआ है। और ये हिंदू परंपरा के विरुद्ध है। हिंदू परंपरा उनसे संघर्ष करती रही है, विचारों में भी और फिजिकली भी। ये काम दोनों ही क्षेत्र में बंद कर दिया गया है, बल्कि उसको बढ़ावा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो पिछले, आपने जो पीछे कोनराड से प्रश्न पूछा था उसका लास्ट पार्ट वो शायद भूल गए आप। तो मुझे लगता है कि उनको फिर से याद दिला करके वो पूछे कि व्हाट इज द वे अहेड। ये उन्हीं से पूछा जाए तो अच्छा है। ठीक है, ओके, या व्हाट इज द वे अहेड, दैट्स द concluding question to you. After that we'll go to the audience. Okay, well, the way ahead. Unlike in the case of Islam, in the case of Christianity, demography as such is less of a problem. Christians also practice birth control. So there the focus is more on their side on conversion. They want to grow in number not through birth but through conversion. So you can defend yourself rather more easily against that, namely by making people immune to conversion. Now, for that, it helps if in your school books or in your education system, you can instill a more scientific, more skeptical look at Christianity. I mean, there are obvious irrationalities in Christianity. And I know that the secularists try to use this argument of rationality precisely against Hinduism, whereas Christianity is far more susceptible. You see, in Hinduism, there are superstitions here and there, but they're not fundamental to Hinduism. You know, you can outgrow them and still retain Hinduism, still retain Vedanta and so on. Whereas in the case of Christianity, there are some very strange superstitions, like the idea that somebody died and was revived. You see, even in the gospel itself, you already find a few indications that Jesus didn't really die. You see, the people who see him after he rose from the grave, they're a bit surprised. But the description of the behavior of Jesus indicates, as Islam says,
that he didn't really die. And there are indications that the Romans didn't want him to die on the cross. Like normally, if you were crucified, at some point your bones were broken so that you would like sink on the cross and just, choke and die as a result. And so there are indications that the Romans didn't want him to die, and so maybe he didn't die. And maybe this whole dogma of the resurrection is a completely overgrown mistake. You see, it's quite possible that an ordinary human mistake, grows out into a dogma that shakes the world, that controls the religion of billions of people. This is at the same time strange, but humanly perfectly possible. And that's what happened in the case of Christianity. Then stuff like the virgin birth and so on, that's just silly. Then there are more serious criticisms of Christianity, which again are not too difficult to familiarize the masses with. You see, there is this notion of sin in Christianity. I'll sum up Christian doctrine in just a few sentences. You see, mankind has fallen through sin, has lost his immortality, which is normally God-given in paradise, but because of sin, he fell from paradise, he became mortal, he had to earn his keep in the sweat of his brow. You see, children had to be born in pain and so on. Then God commiserates with mankind, and he sends his only son in order to suffer, but thereby redeem mankind from sin. And so sin is linked with mortality. So Jesus conquers death by the resurrection and thereby lifts the burden of sin and makes men immortal again. Now here there is a bit of a twist in the story, because people have never become immortal. And indeed, Jesus himself hasn't really become immortal. Because what does he do on this very day, this Ascension Day, at the time when we record this? He goes up to heaven. Now that's what all people do who die. You see, by way of speaking, they go up to heaven. They go to the hereafter. And Jesus does exactly the same thing. You see, living people who have not died, you can encounter them somewhere. Maybe if they're rich and famous, it's not very easy to get a personal meeting with them. But nevertheless, they are somewhere around here. And Jesus is not just like all the dead people. So you see, the basic dogma of Christianity, namely the resurrection of Jesus, Jesus conquering death, is silly, So, if you learn a few of these basic facts about Christianity and not peripheral little scandals about priests misbehaving or so, no, about the basic doctrine of Christianity, then, people ought to be immune for conversion to this. It's like, you see, we've had the episode 400 years ago of a changeover from geocentrism, believe that the earth is in the center, to heliocentrism, believe that the earth revolves around the sun. Now today, people can throw as many dollars towards the effort of coming to persuade me, but you see, whatever they say, whatever they offer me, maybe by torture they can make me say that the earth is in the center, but I'm never going to believe it anymore. I know better. And so once you know the true story of Christianity, you are totally immune against conversion to Christianity. So that, I think, is the most important thing to do. Then secondarily, of course, it is good to take a close look at the funding of the church, to stop the inflow of money
towards Christian NGOs and so on. To some extent, in fact, the Narendra Modi government has worked in that direction. So all these things are useful, but you see, they are not fundamental. The church has its tricks developed, by long experience in many countries to get around such constrictions. So, it's good to work on that, but it's not ultimately going to solve the problem. So the most fundamental thing is to make people understand what Christianity is about. Correct. That neatly sums up the whole approach to Christianity that Hindus should have. And on that note, I think I'll wind up the talk because I do not find any questions today, strangely. So that's very rare on Jaipur Dialogues, because often we are flooded with questions that run almost 1 hour. Today they don't seem to be asking any questions. Maybe they're completely hypnotized by Koenaraad's talk. So we will end this here, and thank you very much. And I think, shall we run the next one next Thursday? What do you say, Koenaraad? Yeah, I mean, you were muted, so I couldn't hear. Okay. Well, yeah, that's okay. Next Thursday about Sitaram Goel's forward to the Calcutta Quran petition, where he diagnosis of the case of Muhammad. Quite right. So, viewers, that will be next Thursday, when in our 3rd episode in the Sitaram Goel Centenary series, and that will be on the foreword to the Calcutta Quran petition, and that would give you a great overview of all that controversy that has been going about the Quran petition being filed at the Supreme Court. And I will, of course, give you the legal perspective as well. So thank you once again, Shankar Sharanji. Aapko bahut bahut dhanyawad. Koenaraad, thank you very much. Wonderful bit of analysis. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. Thank you, Koenaraad. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.